हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो और तंदुरुस्त हो। तो in this video we will be discussing about revisit the tax treatment of tobacco product. So what actually tobacco is? Everyone knows that. Even everyone knows the harmful effect of consuming tobacco or consuming those things which are not even necessary for our health, but still for pleasure, for relaxment, for forgetting the things and getting into a divine spiritual we can say spiritual enlightenment, we usually consume alcohol, we usually consume tobacco, isn't it friends? Yes, that's the thing which usually everyone, not only you, not only me, but everyone who are employed, who want to get rid of their difficulties, there is a special kind of relaxment by consuming these tobaccos. So यस, वो आदत हो जाता है यार। क्यों आदत हो जाता है हर एक को पता है, ठीक है। तो वो अगर अगर मैं कि जैसे कि हम जानते हैं हर एक एजुकेशनल चैनल में कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, जैसा कि जैसे कि अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए डेफिनेटली दे विल डू दैट। व्हाई? बिकॉज इट यूजुअली अट्रैक्ट्स द व्यूअर्स। तो व्यूअर्स को अट्रैक्ट लाने में या फिर व्यूअर्स को खींच के लाने में ये बहुत ही ज्यादा काबिलियत बनेगा, क्योंकि मेरा वीडियोस में बहुत ज्यादा स्पाइक हुआ है और मेरा रेवेन्यू भी इंक्रीज पैरेलली होगा। सो इन द सेम फैशन जीडीपी भी वैसा ही चलेगा, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट को अगर हम ज्यादा बेचेंगे, डिमांड अगर ज्यादा बढ़ेगा, सप्लाई अगर ज्यादा बढ़ेगा, डेफिनेटली द रेवेन्यू विल गेट इंक्रीज, राइट। सो एज पर अगर मैं यूट्यूब की बात ही कर लेता हूँ, व्यूज बढ़ेगा तो फिर डेफिनेटली जनरेशन होगा रेवेन्यू। तो उसी प्रकार डिमांड एंड सप्लाई का भी है इधर। सो इधर क्यों टैक्स ट्रीटमेंट को करना है, क्यों टैक्स ट्रीटमेंट को बहुत ही ज्यादा गौर से ध्यान में रखना है। So those all things we will be discussing in this video, in the topic named so called revisit the tax treatment of tobacco product. So these are the certain points which are even been necessary to discuss, and I hope it will definitely make you clear regarding what actually I want to convey, or even the Airtel wants to convey. Even I have the snap of this Airtel. Okay, I will be showing it. Do not worry on that. And this is the snap. Okay, so before that, I just want to discuss all the things, all the topics, all the points which are even been necessary to grasp up the things. And whenever we are going to write the examination, then definitely our mind should not stuck on any other point rather than sticking into the things which are being displayed in the Hindu Airtel page analysis. Okay, so these are the points which I want to discuss. One is research in India are and around the world supports the use of tax and regulates tobacco consumption. तो ये यूजुअली क्या बताता है कि रिसर्च जो कि हुआ है इंडिया में। Okay, so around the world support the use of taxes to regulate tobacco consumption. Definitely tobacco consumption कैसे increase करें या फिर कैसे इसको हटाए, या फिर कैसे अगर इसको लिमिटेशन में रखे, ताकि पैरेलली ग्रोथ हो सकता है हर एक जीडीपी का या फिर जीएसटी का, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सो इन इंडिया टोबैको टैक्स हैज नॉट नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी ओवर 5 years ago। तो 5 years ago में जब जीएसटी लागू हुआ था, ये इंक्रीज या फिर स्पाइक नहीं दिखाया गया टोबैको में। बट दिस मेक्स द प्रोडक्ट इंक्रीजिंगली अफोर्डेबल। एसेंट स्टडीज, अगर हम एक चीज बहुत ही सस्ता दाम में मिल सकता है जो कि नशीली है, जो कि हमको हेल्थ के लिए हानिकारक है, डेफिनेटली द पर्सन्स विल डेफिनेटली अफोर्ड दैट, बिकॉज वो सस्ता दाम में मिल रहा है हमको। सो इन द सेम वे, व्हाई कैन नॉट द जीएसटी गेट इंक्लूडेड in the services, in the products which are been saying that it is giving something amount and something amount is being deducted from our health। ठीक है, अगर आप दोगे पैसा देकर हमको क्यूर करना, पैसा देकर हमको क्या होना है, बेड में सोना है, बेड में मतलब हॉस्पिटल बेड में, ठीक है। तो दैट्स व्हाट एक्चुअली द मेंटालिटी ऑफ इंडियंस आर। सो why cannot in this way, in this point I want to make you clear, tax treatment failed। सो टैक्स ट्रीटमेंट क्यों फेल हुआ है वो भी आपको बता दूंगा। कोई इन 27, अगर 2017 के बारे में बात करें या फिर उस ईयर में क्या हुआ है, द इकोनॉमिकल बर्डन एंड हेल्थ केयर एक्सपेंस ड्यू टू टोबैको यूज एंड सेकंड हैंड स्मोक एक्सपोजर अमाउंट ऑफ 2340 बिलियन। इट इज नॉट इवन वेरी लेस, right? So you must and should have to remember that
340 billion is not even less. But still, you must and should have to remember the things that an economical burden on the healthcare expenses must parallelly hands on, must parallelly gives an uh, idea that these are the things which are been happening, and we need to control, we need to have a control over that. So here the third point usually signifies, or third point usually says about. So अगर हम fourth point के बारे में discuss करें, one issue is to overuse of ad valorem taxes which are not effective in reducing consumption, or we can say many countries use a specific or mixed tax system for harmful products. Definitely they use that. Okay, so वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट इज लास्ट नंबर पॉइंट, कि लास्ट नंबर पॉइंट में क्या बता रहा है कि a large part of compensation keys sees as well as national calamity contingent duty or nccd. It is levied as a duty of excise on certain manufactured goods specified under the 7th schedule of the Finance Act 2021 or 201 or 2001. Currently applied on tobacco product is specific. If specific tax are not revised regularly to adjust for inflation, they lose their value. So inflation indexing should be made mandatory for any specific tax rate applied on tobacco product. So इसमें यूजुअली क्या दिखा गया है कि जैसे कि 2001 में जो फाइनेंस एक्ट लागू किया गया है, नेशनल कैलामिटी कंटेंट ड्यूटी, वही अभी भी चल रहा है. अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो फिर कैसे हो सकता है? अगर एक एक फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडस्ट्री की बात ही ले ला हूं, अगर एक बंदा दूसरे बंदा से अपडेट नहीं है स्किल्स में, अपना इन्वॉल्वमेंट्स में, अपना 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 क्या है, अपना वे ऑफ डिलीवरिंग कम्युनिकेशन में, डेफिनेटली वो बंदा हायर थोड़ी ना होगा. तो दूसरा बंदा है वो हाईली स्किल्ड है, उसके पास सब कुछ एफिशिएंसी और डेफिनेटली हायर किया है, क्योंकि ये बैकलॉग है, बैकलॉग रह गया है, रहेगा ही. सो इफ द सेम सिचुएशन arises in our GST or taxation system also, then definitely the thing is going to be changed. So that's what actually here it signifies regarding the taxation systems which are being displayed here. Okay, तो बाद में हम इसके या इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि सर्टेन पॉइंट, जैसे कि मैं इधर बता गया, मैं ये यूजुअली बता चुका हूँ कि द जीएसटी सिस्टम इन इंडिया रिलाइज मोर ऑन एड वर्क, जो कि मैं पॉइंट भी आपको नोट किया. इसमें ये भी दिया गया है कि इंडिया द शेयर ऑफ द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इन टोटल टोबैको टैक्सेशन डिक्रीज subsequently from pre GST to post GST for cigarettes, BDs, smokeless tobaccos एंड लार्ज पार्ट ऑफ कंपनसेशन सीज ऑफ नेशनल कैलामिटी कंग्रेंट, जो कि मैं बताया था. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स में यूजुअली घटाया गया है या फिर सब्सिक्वेंट डिक्रीज पाया गया है. 54% टू 8% सिगरेट्स में, 17 to 1% बीडीज में, स्मोकलेस टोबैको जो कि 11% घट गया है, जो कि 5 से लेकर 59%. So the GST system for tobacco taxation is hindering efforts in regulating the consumption and protecting our public health. ठीक है, ये भी आपको इधर दिया गया है. तो आपको ये भी मेन पॉइंट इधर द मीन्स वर्णित है कि द जीएसटी रेट ऑन certain smokeless tobaccos ingredients such as tobacco leaves, tendu leaves, menthol leaves, ari nuts, etc. have either 0 or 5% टू 18% ऑफ जीएसटी, जो कि अपना जीएसटी यूजुअली लागू करता है. और ये भी दिया गया है कि बिफोर जीएसटी टैक्स टोबैको वाज फार मोर गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द रेवेन्यू इन द रेगुलेटिंग कंजम्पशन. फॉर एग्जांपल, Rajasthan has 58% of VAT on tobacco product. After GST, states has been no longer raising the rates of tobacco, this hindering the ability of the increasing the revenue and regulates the consumption, while a uniform tax across the country is good. Not increasing it in the national level at regular interval harms public health. So it usually causes for the concern that the while most of the countries regularly increases tax, okay, increases tax on tobacco product to make them less affordable. Okay, India has not increased taxes on any of the tobacco product in the 5 given years. Okay, so these things you must and should have to note, folks. So then only it is even possible for you to make an understanding regarding certain things. Okay, so unless and until you do not have an awareness of how actually the GST works,
then definitely certain things might fail. Okay, so yeah, it's really important, it's really crucial when we discuss about the things which are even necessary. Okay, so I just want to make you confirm, right folks? So this is all about the video lecture for you. I do not want to make your time much more concept. Okay, so let me end the video. It's video for you folks, and yeah, thanks a lot folks, thanks a lot, because your time for reading the reading and listening the things are very important for me to increase. If you are new to this channel, please do subscribe as like others. Yeah, but yeah, I do not include memes, तो memes का include नहीं होना है, क्योंकि पढ़ाई में वो डिस्टरबेंस या फिर हिंड्रेंस नहीं होना है आपको। जो भी कंसंट्रेशन लगाते हो वो लगाकर पढ़ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद folks, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।